Very good morning to all. And Professor Braj Bhushan of IIT Kanpur was supposed to join us today because of some serious issues in the family. He ran to the Jharkhand to stay with the uh, family members, very important family members. So I suppose he will join us in days to come. And today we have Professor Akbar Hussain Sahab, very senior professor of the uh, university. मेरा चश्मा कहाँ पे रह गया? So first, please allow me to welcome sir. Thank you, sir. Professor Akbar Hussain was a professor in the Department of Psychology, Aligarh Muslim University, Aligarh. He holds a wide array of academic qualifications, including masters, MPhil, PhD, and DLit in psychology. The subsets of his interests include applied personality, social psychology, clinical health, spiritual, and positive psychology. And over the academia, we used to label him a spiritual guru. Throughout his academic career spanning over 40 years plus, he effectively mentored a total of 35 doctorate students, postdoctoral candidates, and number of MPhil and master's program students. Professor Hussain has authored 35 plus books, if I'm not mistaken, sir. Number ज़्यादा हो सकता है. 46, I'm sorry, sir, 46 books. So, बिल्कुल hesitate न करें. And he has effectively conducted exceptional research initiatives financed by prominent national bodies, including R&D organization of the Government of India. And the professor has received worldwide recognition and distinguished honors for his extensive and impactful contributions to the area of psychology. Professor Hussain has been engaged in his academic pursuit, publishing number of articles, hundreds of articles. And Professor Hussain has successfully standardized a number of psychological tests. Friends, it is privilege to speak before Professor Hussain साहब. मैं यहाँ पे आप ही की वजह से हूँ. मेरा gratitude सर. हमेशा मैं इसी तरह से आपका शुक्रगुजार रहूँगा. मैं तो रेलवे अधिकारी था, लेकिन टीचर बनना एक सपना था. So he has been kind enough to consider me in the mainstream of teaching, and I am trying to make a difference, trying to be at your expectations. Thank you so much, sir, for accepting our request. And friends, Professor Hussain हमारे साथ 2 session रहेंगे, and he will be speaking on the development and standardization of psychological test. And this ability is very, very, very close to my heart as well. After joining the organization, I also was instrumental in developing and standardization and publication of 24 plus psychological tests in 8 years of the academics. ये बहुत बड़ा काम है, and one of the test is equal to 1 PhD, आप देख सकते हैं. And बेनतहा आपको नॉलेज ट्रांसफ़र की जाएगी. जब जब वक्त मिला मैं भी आपसे बात करता रहूँगा. So there is a large number of success stories of development, standardization and publication of the psychological test. जब आप अपनी रिसर्च पैराडाइम में आगे बढ़ेंगे तो you know there is a large difference between physical measurements and psychological measurements.
to make them at par, there is a need to go for standardization. So, sir, उस मामले में आपसे अपनी knowledge share करेंगे. My gratitude, sir. And friends, one more memento. देखिए बहुत बड़ी तालियां बजनी चाहिए. Thank you so much. आई कार्ड सभी का होना चाहिए. आई अपील यू ऑल. देखिए सारी रिकॉर्डिंग ICSSR एंड यूट्यूब पर हम लोग शेयर करने जा रहे हैं आज से इंशाल्लाह. सो थैंक यू सो मच सर. आई विल बी स्टेइंग बैक विद यू सिंस मॉर्निंग टू द इवनिंग. थोड़ा सा ऑफिस का काम पूरा करके आता हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Professor Khan Sahab, for giving my introduction. Yes, so yesterday, basically, I celebrated 43 years. Still, frankly speaking, because I joined on 4th December 1980 in the Department of Psychology and served more than 41 years, 7 months as a regular service. So still, I am basically involved and writing books. So every day I used to do some work, minimum 4 to 6 hours, and devoting most time on writing books in the field of Islamic psychology. Because recently I got, my name is appeared in the Taylor Francis book, Routledge Publications, as a contemporary thinkers in the field of Islamic psychology. Because throughout the world we are only, maximum we are 15 in numbers. So I started somehow this work in the year 2002, but anyhow now I got recognition into this. So as regards to the testing or development is concerned, so basically, I mean, I taught this particular course, psychological testing, or the personality as assessment, more than 4 decades, not only in AMU, even in the University of Malaya. There was also 2 courses related to this, that is measurement and evaluation in education, and these psychological testing or personality assessment. So as far as the psychological test is concerned, so testing is not only confined to the discipline of psychology, even that we developed a number of tests in the field of sociology or social work and library science, and somehow even recently I started some work in the field of Islamic studies. So I am also motivating students that they should also learn as well as develop some skill with regard to the conducting the behavioral studies. Like in political science also, we do survey political behavior or something like that. So of course, the testing is not only confined to one particular discipline, rather than it is found in almost every field of social sciences, behavioral sciences, even commerce or management, they also do. Yeah. But here we give the test name is like a psychological test, but anyhow the testing is there. And the assessment, because the assessment is involved, is the entire process involved in collecting information through observation, so test is one part of the assessment. Besides, there are observation method we use interview method also. For this we use case studies also for the purpose of assessment, like in the clinical setting we use case studies also. So this basically test part is concerned. The concept of measurement. So measurement क्या है? Measurement is the assignment of numerals according to certain rules. So of course,
the rules what we follow, that is the set numbers. Like as you have seen, the soccer player, football players, so you will find on the back of the jersey of every player, you will find certain numbers. Particularly, so it helps in identifying a particular player, because it is difficult for us to remember or identify an individual by name. Particularly, any player, you may say, belongs to European country, like Brazil का player है, Argentina का player है, one or two players you can remember the name, not the member. So that's why, so they print that certain numbers on the jersey of the every player. So it helps in identify. So we follow certain rules, which number. So sometimes the players also opt or prefer to opt a particular number, that this number is to be written on the back of the jersey to me, because it is more lucky number for me. So of course, so in the rule, a guide method or command that a researcher tells a researcher what to do. So what is the significance of this number? So sometimes this number is an identification. So of course, whatever the research we do, so in almost every kind of the research, particularly the quantitative researches as well as the qualitative researches also, so we develop certain taste to do the assessment of the individual, to do the testing of a person. So evaluation, appraisal or assessment that respect to some standard. So of course, say for example, evaluate. So we do evaluation. So for example, measure the temperature, body temperature. So of course, there are also, like in Celsius or Fahrenheit, there are also numbers are there, like 98.4 degree temperature is the normal temperature. So we follow certain standard for the evaluation. So similarly, like a systolic or blood pressure also, we follow what should be the limit of that particular number or the level, so that we may say whether the person's BP is high or low, or temperature is high or low. Or similarly, like in terms of the height also. So height also, height in terms of the, we use measurement, physical measurement. That is the, say for example, the measuring instrument or the scale we use for this particular purpose. So measurement में क्या है? There are 4 types of measurement we use: nominal scale, ordinal, interval, and ratio scale. तो nominal scales में क्या है? Portion, mutually exclusively and collectively exhaustive categories. As I told you, that we assign numbers, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like to in this. Ordinal scales are in certain order, like 1, 2, 3, 4, 5. So sometimes when we apply certain statistics, like an ordinal scale is sometimes it is also overlapping with the interval scale, like strongly agree, undecided, or disagree, or strongly disagree. So there is number 5, 4, 3, 2, 1. We assign number for the purpose of the scoring the scale. So generally the data which is obtained, suppose if you follow the ordinal scale, so when we apply the statistics like Mann-Whitney U-test, if the same data if you follow, then you can apply t-test. But generally majority of the researchers use t-test for the purpose of the data. So interval scale, ordinal scale with the equal intervals point to show relative amounts may include an arbitrary 0 point also. So similarly, ratio scales. Interval scales with meaningful 0 point so that a magnitude can be compared arithmetically. So by and large, majority of the tests or psychological tests or the tests in general are based on either on ordinal scale or interval scale. We don't use nominal or ratio scale for the purpose of
So there are certain general problems of measurement. Indirectness. So most of the psychological और एजुकेशनल टेस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्योंकि अक्सर होता है हम लोगों को होता है समटाइम्स व्हेन द लेमैन इंटरेक्ट विद अस, तो मोस्टली टू द साइकोलॉजिस्ट जनरली दे आस्क नाउ यू टेल मी व्हाट, तो जनरली वी आर confused about the assessment. That is not a personality. Personality is how you behave, how you think, how you act, not only basis of the body or the bodily state. You cannot assess. That is the, if you assess the personality of individual, that is the indirect, you may say, or incomplete your measurement. We cannot assess through or on the basis of the silhouettes. That is the outline of the body, like an asthenic, athletic, or the picnic. We cannot measure. So, जैसे for example, I gave an example like indirectness. If a teacher wants to measure the intelligence of a student of a particular class, so of course, such a situation, measurement of any trait variable becomes a source of perpetual difficulty. As you know, that in the discipline of psychology, education, we know about the concept certain social intelligence, emotional intelligence, general intelligence, or spiritual intelligence. So if you read the contribution of Al-Farabi, you will find that he informed us that there are 10 intelligences, not 1, 2, 3, or 4. Or he used to or coined the term intelligibles for that. So of course, so if we follow that particular or his point of view, so definitely the intelligence what we use, that is the, is not a complete or kind of the measurement, rather than it is an incomplete particular measurement. So psychological educational measurements are generally incomplete. क्यों? Because sometimes when we use certain projective tests, like a unstructured or semi-structured test, आपने बहुत से टेस्ट ऐसे देखे होंगे कि where there is no, you may the cue is not so clear, it is more either ambiguous or semi-ambiguous in nature. So in that particular test, so when we use projective test for the assessment of the aptitude, then it is called subjective test also, because there are two broad categories, objective and subjective. So similarly, to that attitude towards, say for example, psychoeducation, so it is an incomplete of measurement. It depends on the culture or the, you may say, cultural pluralism aspect, that where you tends to measure or what criteria you follow in order to do the measurement. So relativity of measurement, most psychological educational measurements are relative. There is no such thing like an absolute. For example, suppose if you say, like take an example, prayer. So in some cases, of course, there is a general concept that prayer improves well-being. So now the question arises, what kind of well-being it improves? If you are performing a prayer in congregation or in a group, in a mosque or in a temple, then social well-being is improved. If you are performing individually, then your psychological well-being is improved. If you perform prayer or collect in the form of a meditation, it is a spiritual well-being. Like in Islamic concept, there is an etikaf or the Taraweeh prayer. When you listen the verses of the Quran, Bible, so then it improves your spiritual well-being. So spiritual well-being here also, that is maybe in terms of your existential, or it may be religious well-being. There are, what are the two components of it is concerned.
So of course, so there is a relative. So sometimes we make a comparison in terms of the groups also. Okay, those who perform prayer, so, or those who are. Particularly in the case of the counseling, some students they come up okay, that they bring the problem okay, that they are feeling depressed, they are stressed, but they perform prayer. But here, so in those such type of cases, perhaps they may not be aware or knowing the significance of the prayer. So in terms of understanding the concept of this, so I developed minimum 6, sometime I do not remember correctly, minimum 60 different types of the models to understand the different concepts. So like a prayer, so we use, when we do I mean you must suggest or recommend for the purpose of the counseling to the prayer. Then we used to do or explain the concept, what prayer stands for. So P stands for purification of the soul or purification of the heart. R, letter R, remembrance of Allah or remembrance of God. A, attention. When you perform prayer, of course the attention is needed. Y, it helps in developing yearning. You establish longing with the God or connectedness with the God. E, it develops eternal consciousness. R, another R, letter R, it helps in the recovery. Either you do the recovery of the, when you do or observe the alms for the others, so recovery of the others' well-being or the recovery of the self also. So this, but I developed such type of model. The majority of them have been published in the international journals or proceeding of the seminars or something like that. So there are certain errors in measurement. So most of the time measurement in behavioral science is not pure. So there are so many uncontrolled factors are also there. So when we perform certain experiment in a 4-wall room situation where you can do control certain the influence of certain variables, but when we do survey type of research or use, so there are certain, so those, so when the situation is there, when there is a uncontrollable situation there, so of course there is more chances of the errors in the measurement because everything cannot be covered. So I gave an example about the physical measurement. It may be inflate or reduce or actual weight or some times of, say for example, like prescription of certain drugs. So when we prescribe certain drugs for alleviating, helping and alleviating any kind of the human suffering, so those who do the proper compliance of the drugs, so they get cured easy. Or sometimes there are certain drugs, they might have a effect also. Say for example, like in India particularly, where we do not follow any law or ethics or with regard to the use of the physicalistic medicine. So in India we have more not too much problem about the drug abuse, rather than drug misuse is there. So drug misuse maybe occur at 7 levels, like drug store, pharmacist. In India, majority of them are illiterate fellows. So we are so suggestible, irrespective of the level of education. Sometimes if any particular drug is not available on his shop, so he used to give or suggest, okay, you buy because it contains the same compound. So we buy it. It is also misuse. So similarly, when we suffer from fever, the doctor prescribe, okay, better you take a medicine at least for 2 days. So we stop. When the fever goes down, we stop taking medication. It is also misuse. Ultimately, what happens in some of the cases that there is a possibility of the conversion of the pneumonia आ गया, typhoid हो गया आपको, you may suffer. So sometimes drug interaction is also involved when we suffer from flu.
जुकाम हो गया आपको तो क्या वो करेंगे, वी यूज टू टेक होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, every type of drug we used to take because our main aim is to get subside it as much as early possible. So drug interaction, that is also misuse. So if such type of phenomenon is there, so there is always an error in measurement. So now I come to the test construction. आपको टेस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द any, I mean, you may say, as I told you, assignment of numerator, it can be defined as a, in terms of measurement about the quantitative data. So in the context of meaning of test depends upon its application, that is the qualities such as intelligence, aptitude, attitude, personality. All these concepts are multidimensional in nature. Earlier we have a, say for example, anxiety. So majority of, as a layman, majority of us has a concept anxiety, but it may be a competitive anxiety. Like in the case of the sports person, it may be competitive anxiety. There may be death anxiety. So death anxiety, if people have, so they develop anxiety that any time death may occur due to any particular situation or the condition, that due to fire one may suffer, or it may be due to you may say attack or assault by the other person, one may due to heart attack or due to any particular disease. So there may be so many kinds of, so it means it is not a unitary phenomena, rather than it is a multidimensional construct is there. So the test series question on the basis of which some information is signed. तो कहते हैं standardized procedure to measure quantitatively or qualitatively one or more aspect of the sample, that is to say verbal or non-verbal behavior. Like an intelligence, we use verbal test also or the non-verbal test also. The purpose of psychological test is twofold. It attempts to compare the same individual on two or more than two aspects of traits. We do the comparison between the gender, male and female. We do the comparison between the higher socioeconomic status, lower socioeconomic status individuals. So comparison, or may be compared on the same trait, we compare between two individuals also. So it depends on what approach we follow, either the idiographic approach or the nomothetic approach we follow for this. So standardized test, any form, requires all test takers to answer the same questions or selection of questions, that common bank of questions in the same way or standard of consistent manners to relatively perform some individual to examinee or group of examinee. So sometimes we do the testing individually, particularly in the clinical situation. Whenever we do the diagnosis of a mental patient or patient suffering from any psychoneurotic or psychotic disorder, we prefer to do individual testing. Because our purpose is different. Our purpose is not only to get a score on a test. Our purpose is to observe the test-taking attitude of that person, how he is taking it or receiving a test, and how he is responding a test. That is also our, so our purpose of the assessment varies from setting to setting, from individual to group. So when we are interested in doing the measurement of the aptitude or specific ability of an individual, so there should not be a group of, there should be a small group, means 3 to 5 individuals, not to 10 or 20 or 30 or 40 individuals. Otherwise it would be very difficult for you to control the conditions of those experiments. So of course, so these are the 5 characteristics of a good test. Objectivity, how much it is objective in nature. That is standardized. Earlier we used to do the word standardization
for it. So standardization covers the objectivity as well as the norms also. So now we have a split it. So, tests which contains items in the form of words, statements, they are more objective as compared to the test which contains certain pictures. Because projective test we also use. Actually, the topic what I took, frankly speaking, to explain each and everything, it needs 1 month. Because when I was in Malaysia, I used to teach it 3 hours, or in one semester, this course is taught 5 hours. The duration of one period was 5 hours, 8 a.m. to 1 p.m. So when this course was assigned to me, so I did not ask to anybody how is it possible to take class 5 hours. And Wednesday to Thursday, I used to take 2 classes, 3 to 6 and 6 to 9. But in the next semester, when I have an interaction with some of the faculty members, local faculty members, then he used to say, okay, you give 15 minutes break for the prayer between 3 to 6 and 6 to 9 also. In the case of 5 hours, you can give break of half an hour. Otherwise, in the next semester, nobody will offer your course. So this was the duration of that particular test. So of course, objectivity is there. Reliability. Reliability means consistency of test score. How much you give a consistency. Suppose if you take a measurement, physical measurement like a weight, so sometimes you question whether your weight is really 60 kg or not. So what you do? So you prefer to do or select another machine of the same kind and take the measurement. How much consistency is there? So this is called alternate or parallel form. So similarly, sometimes when you don't have sufficient time to administer a psychological test or any particular test, okay, you can split the scores into 2 categories. So when I will go through, I will explain in detail. Similarly, validity also refers to what the test measures or purports to measure. आपने जिसके लिए बनाया वो टेस्ट मेजर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. Similarly, norms also, we develop percentile norms, standard score norms, 69 norms in order to see the relative position of an individual in as compared to groups norm. कि आपकी कहाँ, where you stand. क्योंकि अक्सर होता ना कि कम से अब भाई होता है, suppose if I give you one particular test which is meant for measuring the measurement of intelligence. Suppose if an individual scores 0 point, so on the basis of that you can infer that he is having no intelligence. So do you think is it a correct interpretation? Nothing like that. But the test items what I administer on to you, that of course really tell us or provides information that such type of items a person may not be acquainted with it. That is how to it. Because the tests are biased. One test I am giving you an example. Those who are students of psychology, they should know, like Raven's colored progressive matrices, this test is a non-verbal. Even that it is not a culture fair test. If the test is measured on the ruler sample, so sometimes it is difficult for them to identify or fill that particular gap. Practicability, how much your test is practicable or given knowledge about it. Say for instance, there are certain psychological tests like Hamilton's depression scale, Beck's depression scale. So it has you will find these tests were developed during 60s and 70s, and these tests are still applicable or practical. Similarly, like Costa and McRae, big 5 factor. It is available. So these are the certain characteristics of a good test. अब कहते हैं the test should be free from subjectivity, judgment regarding ability, skill, knowledge, state, potentiality, measurement. तो यानी कि क्या होता, कब आएगी आपको, when you administer the same test in a same format, same situation, same that is, suppose
if I administer one particular test to some individuals at the individual level, and the same test if you administer to the in a group, small group or larger, so of course there would be variation in terms of getting the scores. So first you have to do planning or decide, that is how to collect the data, whether individual, small groups or large groups. फिर से हम कहते हैं standard test content in all its versions also. So sometimes it means we do the translation into native language, में translation कर लेते हैं. Some tests have been developed in the United States, we want to adapt it to the in Hindi. So of course it requires a standard procedure. That is, first the test is needed to do the translation from English to Hindi, then Hindi to English, and some judges, a person who is good or well versed in both the language, he should be recruited and make the comparison of it, whether both has equivalence or not, because sometimes the meaning of a particular word changes, or it has a different connotation in different culture or the background about it. तो कहते हैं डबल बैकवर्ड ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है इसको. तो rigorous development trailing or revision process determining the measurement properties of the test. Sometimes some tests, suppose if you have framed 50 questions in a particular test and got a less reliability, 0.60. So for that there is a possibility that you may supposed to reduce the number of items and you may get the higher reliability. And in some cases, if the items are less in number, then for example, like in our field of positive psychology, majority of the items are very few in number. But when these tests have been administered to the Indian sample, we get very low reliability, or the reliability which can be considered as a challengeable reliability. तो कहते हैं इसी तरह से दिस प्रोसेस इंक्लूड्स प्रिंसिपल सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिफाइनिंग द मेजरमेंट स्केल्स आल्सो. फिर जनरल स्टेप्स, डेवलपमेंट ऑफ थ्रू आउट साउंड एप्लीकेशन, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. अब उसमें क्या कहते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्टर हैज़ टू डिसाइड कि विच पर्टिकुलर अप्रोच वी शुड फॉलो. तो देखिए इन जनरल, लाइक इन द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी in particular, but in general also, we follow 3 approaches. That is to say, theoretical approach, empirical approach, and factor analytic approach for the development or the construction of any test. So nowadays, factor analytic approach is most popular because every test is considered as a multidimensional construct. So we follow that test is definitely would yield certain factors, not one. But recently in one case, because one of my students, she did work on righteousness. So no such measure was available throughout the world. This concept is well evident or well described in almost every religious traditions. The concept of right, but no such test was. So when we framed certain items, we have a certain ideas about it, that it should be multi. But when we did factor analysis, so we found only one factor. It was this construct. We found only unitary factor. एक ही dimension निकली, आई नहीं 4-5. ऐसा भी होता, sometime it happens. तो जनरल स्टेप्स कहते हैं टेस्ट इंस्टेंस. तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं. देखिए प्लानिंग कीजिए आप. अब देखिए मेरी प्लानिंग जो है, एवरी आई यूज टू कंसीडर एवरी रिसर्च एज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. फ्रेंकली बताऊं, मैं सबको एक्सप्लोरेटरी समझता हूं. तो अब जैसे तो मैंने बताया कि आई हैव डेवलप्ड मिनिमम 60 मॉडल्स
based on certain concepts like spirituality, certain concepts like Islam, Quran, jihad, prayer, fasting, and did the analysis as an considered all these concepts as an say what as an acronym कि देखें कि इस इन ये आखिर नाम क्यों आए, व्हाट इज हिडन विद इन इट, क्यों यही नाम रखा गया. तो से फॉर एग्जांपल लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ हैप्पीनेस. अब देखिए हैप्पीनेस देयर मे बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड सिमिलरली देयर मे बी वेरियस वेज ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस. अब देखिए हैप्पीनेस जो है इट कंटेन्स हाउ मेनी लेटर्स इट कंटेन्स 9. तो देखिए अब एक मॉडल है हैप्पीनेस ऑनर कि यू गेट हैप्पीनेस व्हेन यू रिसीव्ड एनी ऑनर और अवार्ड. ए एक्टिविटी, पी प्लेजर और अनदर पी पावर, आई इंटेलेक्ट and non-violence and peace, and E explanatory styles you have, or S success or subjective well-being. अब मैंने इसी से पूरा बना दिया. After that then we explore कि whether such is there such empirical evidences are available to support these concepts or not. So of course, so similarly such type of, I mean you may say the word happiness, I have developed 4 different models. Only consider this term. Similarly for COVID and COVID-19, developed 15 different models. Only the word, even the word COVID is an acronym of coronavirus, but even that I explored and written the articles published in different places and books on everything. 15 different models to understand. So I used to do, so my way of understanding a particular concept is like that. कि as a layman देखें how to interpret these things. Similarly, model related to excellence, morality, alienation, so many different psychological. तो planning करो पहले कि आपको how to approach. तो in the planning, you may also do certain or review it. But I used to do planning through my intuitive knowledge. मैं पढ़ता नहीं हूँ पहले, पढ़ना तो मैंने रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा शुरू किया. Earlier, I frankly speaking, I apply my own intuitive knowledge to understand the concept. क्योंकि क्या होता है अगर आप पहले से हम आपसे कहते हैं रिव्यू कर लो जाके, जैसे कि सब कहते हैं सुपरवाइजर ये कहते हैं रिव्यू, तो आप क्या कहते हैं यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अडॉप्ट द सेम पाथ. कहोगे अच्छा इन्होंने 2 बात कही, एक बात हम और ऐड कर देते हैं, पीएचडी मिल जाएगी, आई विल गेट पीएचडी. नथिंग लाइक दैट. तो कहते हैं फिर राइटिंग आइटम्स फॉर द टेस्ट करो. तो व्हेन यू फाइंड सर्टेन factors related to the word happiness or anything like that, then you write certain items related to that. So writing, there is no such thing like a limit in it. It depends on you. But anyhow, each and every factor, there should be representation of minimum 5 to 10 items in each factor. रखो, क्योंकि after analysis, the number of items representing to different factors would be reduced. फिर क्या कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी. पहले नहीं किया करता, तब कुछ साल से ये भी स्टार्ट हो गया वैलिडिटी. तो कहते हैं क्यों, देखिए याद रखिए रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. योर टेस्ट में भी रिलायबल बट नॉट वैलिड. हो सकता मेजर ही ना करे कभी कभी आपकी चीज़. तो कंटेंट वैलिडिटी क्या क्यों करते हैं हम लोग कंटेंट वैलिडिटी, कि आप यू रिक्रूट सर्टेन जजेस, दोज हु आर वेल वर्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट related to that. The number of judges
should not be less than 5 or may not be more than 15. कहते हैं कि बस 5 से 15 तक ज़्यादा जजेस को आप कर लो. जैसे कंसेप्ट लाइक हेल्थ के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, यू में recruit certain judges from the discipline of psychology, any medical sciences also. I mean, those who are involved in doing research, sociology भी है, economics भी health वाले बात करते हैं, economic indicators की भी दे. तो you may recruit them and ask them to evaluate each item in terms of relevance and clarity on 4-point rating scale. दे देते हैं उनको, बताते हैं ये रिलीवेंट आइटम है कि नहीं है, क्लैरिटी है कि नहीं. पहले देर वर आल्सो 2 more डायमेंशन अबाउट इट, एम्बिगुइटी भी टेस्ट करते थे, लेकिन अब कहते हैं नहीं, 2 फैक्टर्स आने देते. तो दिस हेल्प्स इन रिटेनिंग नंबर ऑफ आइटम्स. अब जैसे रिसेंटली आई डेवलप्ड वन पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन इस्लामिक पेरेंटिंग. अब मैं बना ही चले जा रहा हूँ, 100 आइटम मैंने बना डाले, समझे. अब नाउ in terms of the planning, our main aim is to reduce the number of items by applying or determining the content validity of test. फैक्टर भी 5-6 बना डाले, समझे. तो अब कहते हैं कि तो अब जजेस दिएगा, इस्लामिक स्टडी, होम साइंस वाले पेरेंटिंग पे काम करते हैं, एजुकेशन वाले पेरेंटिंग पे काम करते हैं, साइकोलॉजी वाले करते हैं, तो इनके जजेस को रिक्रूट करेगा. कि अब उनसे कहा कि भाई अब नाउ you do the evaluation in terms of relevance and clarity. तो ये CVI कहलाता है, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स. ये ज़रूर कीजिए जब आप बना लें अपने टेस्ट. एजुकेशन वाले लोग, साइकोलॉजी वाले, सोशोलॉजी वाले, समझे, सोशल वर्क डिसिप्लिन के लोग, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू डिटरमिन द कंटेंट वैलिडिटी. फिर आई बात प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट. तो क्या है, to begin with, you can do the pilot study of 50 to 100 individuals. You can do of it and determine the validity, reliability, validity of it. So of course, when you are have an intention or intends to develop any test, so you should have at least 2 minimum samples, one for the standardization purpose, another for the using the same test for conducting your study. फिर कहते हैं रिलायबिलिटी फाइनल टेस्ट की हो जाएगी जब आपके सब डेटा वाटा कर लिया. तो अब रिलायबिलिटी जनरली वी फॉलो द क्रॉनबेक रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी देयर. तो इन द क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी एवरी आइटम इज बीइंग ट्रीटेड एज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो इंटर आइटम कॉरिलेशन निकालते हैं. और अर्लियर वी यूज्ड टू डू द split half also, but nowadays split half method is not widely used because we follow 2 criteria to split the scores of an individual into 2 equal halves. Suppose if a test contains 20 items, you can divide the scores obtained on item number 1 to 10 and item number 11 to 20. Another is alternative item, like odd and even item. So you will get 2 sets of scores. But generally in the case of when we apply Cronbach alpha, so we found high reliability as compared to, because suppose if you split the score, so there is a possibility, suppose if your test is very short in length, 20 items, so and split into 2 equal halves, there may be a possibility in the first equal half, 4 items representing to 1 factor may cover that, and the 1 item may represent to another equal half. So that's why, and the other 2 methods like an alternate or parallel form method, we do not use. Test it if you have a sufficient time at your disposal, then you can also determine the test-retest reliability. That is to say, if the same test is being administered in 2 different occasions. So when the test and retest interval is longer, the reliability coefficient is low. क्योंकि हम पहले से बताएंगे नहीं आपको
कि आज हम टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे, ओके नाउ यू आर एडवाइज टू बी प्रेजेंट आफ्टर 1 month, ऐसा नहीं करते हैं. तो ऑफ कोर्स इन सच टाइप ऑफ reliable procedure, of course the size of the length is also reduced. आज 100 लोग हैं, हो सकता है and that particular day only 80% may be present. So the final sample to be included for the determining the test reliability would be 80, not the 100, because we need 2 sets of score, one today and another. तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट वैसे तो एक और आ गई जल्दी, बट इट इज़ नॉट सो वोग इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज टू से थीटा रिलायबिलिटी भी आ गई है, जिसमें कहते हैं आइटम रिस्पांस थ्योरी अगर आप फॉलो कर रहे हैं देन वन शुड कैन आल्सो यूज द थीटा रिलायबिलिटी फॉर डिटरमिनिंग द टेस्ट. फिर वैलिडिटी की बात आ रही है. अब देखिए वैलिडिटी एक तो आपने निकाली ली, यू हैव ऑलरेडी डिटरमिन the validity of test by using the content validity method. Ab now we need different other types of also predictive validity like intelligence also, or say for example test meant for the assessment of suicidal ideation also. The predictive may be a constructive validity hai, or convergent validity hai, discriminant validity. So many procedures are available to depending on your objectives for this. फिर कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स आपको बनाना है, तो नॉर्म्स में भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, परसेंटाइल नॉर्म्स है, स्टेनाइन नॉर्म. तो जनरली in psychological test we cover 2 types of norm, that is the percentile norms or standard norms or that scale norms we cover. फिर कहते हैं फिर then you test would be readily available for the publication. So of course in India we have so many agencies regarding it, those who publish and pay also certain minimal amount, 5,000, 7,000 rupees for the publication of a test. After that, those agencies, they continue to sell those tests. But frankly speaking, in India, we do not follow any sort of ethics with regard to the publication, with regard to the purchase of psychological tests. Suppose a country like US, if you go and ask that you are interested in that, so first he would like to ask you what course you did and show me your mark sheet also, whether you have studied the course on personality assessment or psychological testing or measurement and evaluation in test or not. Otherwise they are least interested in earning the money. यहाँ तो भाई ठीक है, सैम्पल टेस्ट भी आप 100 रुपये में खरीद लेते हैं हम लोग, एक मैनुअल भेज देगा, एक टेस्ट मिल जाएगा, आफ्टर दैट वी विल गेट द फोटो कॉपी इलेक्ट्रोस्टेट करवा दिया अपना, देन वी स्टार्ट, वी डोंट फॉलो एनी एथिक्स. तो कहते हैं दीज आर द सर्टेन स्टेप्स ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन. अब नॉर्म्स में कहते हैं वे टू अटैच मीनिंग टू स्कोर्स. नॉर्म्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन सैम्पल ऑफ ए गिवन टेस्ट, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इन स्टैंडर्ड स्कोर्स जैसे मैंने बताया, डेवलप्ड बाय द पर्सन हु डेवलप टेस्ट. तो हर के अपने अपने होते हैं. तो जनरली ये भी ध्यान रखिए, वेन एवर यू यूज नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टेस्ट, द टेस्ट शुड नॉट बी I mean you may say very old, because in every culture, particularly like in India, there is too much transformation. After say every 10 years, a lot of behavioral changes occurs. तो बहुत current norms होना चाहिए. It must be based on a sample also. तो हम लोग बहुत से लोग हैं, बहुत से मेजॉरिटी में देखते हैं, even being a supervisor also, a number of sometimes supervisor also, okay you go and search from the internet. तो वो नहीं आता, पर क्या you will, there is a possibility you may get the items, but you won't find any other information about the reliability, validity and norms of that particular test. तो कहते हैं norms हमेशा current होना चाहिए, not more than 20. जैसे देखते नहीं, सोशोइकोनॉमिक स्टेटस है, अक्सर होता है पुराने ले आते हैं हम लोग, इसके यूज़ कर लेते हैं, समझ.
So instead of using that particular test, you can use the simple objective criteria, that is the income or the profession of the parents or the family member, something like that. फिर कहते हैं future user test can compare their score with the norms to know the level of their sample. तो अब बहुत से लोग हमारे यहाँ आपको इंडिया में मिलेंगे, there are so many publishers, they don't print the year of publication on the manual of the test, ताकि किसी ने लगा भाई अरे इसी साल तो आया अभी, समझे? तो ये भी करते हैं, वो टेस्ट का ईयर नहीं पब्लिश करते. So norms are statistical representation of a population. In practice, testing a population representative sample or group is tested. So आप as an individual you can also test following the certain norms, as well as the group also you can test follow. So this provides a group norm, set of norms. तो ये कहलाता है कम से कम नॉर्मल शेप्ड कर्व और बेल शेप्ड कर्व. तो norms are available for standardized psychological tests, allowing understanding of how an individual scores compared with the group norms. कि individual का अब जैसे intelligence में you will find, or aptitude also test, you will find norms based on age also, like a differential aptitude test battery, general aptitude test battery. Norms are based on age. Otherwise, there would be variation in terms of value. But there are certain number of personality tests or they do not follow. But the intelligence and aptitude test, the age norms or the grade norms matter. तो कहते हैं ये टाइप्स ऑफ नॉर्म बताए, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स. तो ये दिस आर द डिफरेंट टाइप्स of the norms which you can prepare about it. Percentile norms, standard scores norms you can develop for the personality test. Age norms, grade norms you can develop for the aptitude test, intelligence test. These are available. अब scaling test को कैसे, how to classify these scaling techniques. So it involves the direct comparison of two or more objects. भाई दो ही लोग में comparison कर सकते हैं. You can make the comparison between two individuals or two groups. You can. फिर non-comparative scale, objects, stimuli are scaled independently of each other. In some cases, you will find that different scores depends on the settings where you have administered a particular test. If you have administered a test on a small group situation, the norms or the would be different as compared to if you apply it to the individual conditions. That also matters. So these are the type of scaling technique. Also comparative scale, non-comparative scale, paired comparison, or rank order, or construct scale, Q sort, and other procedures, continuous rating scales, itemized rating scale, Likert scale, semantic differential, and staple scale. So here these are all the different types of the scaling techniques which we used in behavioral social sciences in general or psychology in particular. But among these techniques, Likert scale technique is more popular. That is, we follow 5-point rating scale or 6-point rating scale or 4-point rating scale to obtain the score, where the other types of the scaling techniques we do not follow. Semantic differential भी करते हैं. Sometimes it is difficult for you to frame items in the form of the statements. So what you can do, the items are in the form of the adjectives and the contraindicative. So indicative adjectives are placed on the left continuum, and the contraindicative or the opposite adjectives are placed on the right continuum. So 7-point risk है, very close, close, slightly close, neutral. फिर very close to contraindicative, close to that, and
just slightly close to that. So we follow. But the items, there are also certain conditions. The items must represent to evaluative potency and activity factor of the semantic differential. अब जैसे like heavy light, तो this item represent to potency factor. Active, passive, it refers to activity. Evaluative items, attractive, unattractive. So it is very difficult for the test developer to frame or to include such item. Very few items represent to it. तो ये these are the अब कहते हैं comparative scaling. Respondent is presented with two objects at time, then asked to select one object in the pair according to some criteria. अब जैसे होता है ना semantic differential में, अब आप either you prefer either active, either you go to the indicative side or contra-indicative side. अच्छा, data obtained are ordinal in nature, arranged or ranked in order of magnitude. अब जैसे हमने आपसे कहा कि लाइक हाइट का ले लिया, अब हाइट एबव 6 फीट ले ली, हाइट एबव 5 फीट 6 इंचेस लेस देन 6, हाइट 5 फीट or more than 5 feet to 5 feet 5 inches. Now you arrange people 1 to 3. How many people are there? So it is easy to do if only few items are there. तब तो आप कर सकते हो, otherwise नहीं. If number of comparison is too large, respondents may become fatigued or no longer carefully discriminate among them. So physical measurement it is easy, like height or temperature or something, it is easy, but in psychological measurement it is difficult to do paired comparing scaling. So अब जैसे I gave an example, each pair of professor please indicate the professor from whom you prefer to take class. रवि, डेविड, पार्कर, थॉमस. अब देखिए, अब आपने इसको रैंक कर दिया कि नंबर 1 पे किसको देंगे आप, डेविड को, पार्कर को. तो these are the example of a paired comparison scaling. तो अगर यही suppose if the pair of professors, number of pairs increases like 10, 20 or something, then you will also get confused to whom we should give. तो sometimes the criteria may be like कि जैसे बाहर कंट्रीज में ये होता था, हम लोगों को evaluation स्टूडेंट्स करते थे, क्या would you like to study any particular course from this teacher XYZ. तो ये वो लोग करते थे कि हाँ क्या पढ़ना पसंद करेंगे. Content, even the evaluation of the content of the syllabi is also being evaluated by students. ये नहीं कि हमें जो आता हम पढ़ा के चले गए, या हमने बना दिया अपने हिसाब से सिलेबस, या हमने जब चाह चेंज कर लिया. Because everything is supposed to be displayed on the website. तो वो सब चीज़ें honesty, मैंने बताया ना, it totally depends on the honesty of the evaluator, not the in terms of the exploitation or something like that. फिर कहते हैं rank order scaling. Respondents are presented with several objects simultaneously, then asked to order or rank them according to some criteria. Data obtained are ordinal in nature. तो क्या है, अरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म करते हैं. तो यानी कि जैसे आपको कोई भी दिया कि कॉमन ब्रांड्स हैं, ब्रांडेड आइटम्स हैं, तो अब आपसे कहा कि नाउ यू रैंक इट फ्रॉम मोस्ट टू. तो इस तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी हो सकता है कि जैसे वैल्यूज़ का है, सपोज इफ आई असाइन यू 5 वैल्यूज़ का, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, है, पाइटी और बेनोवलेंस. तो नाउ यू अरेंज इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंस, हाउ मच you attach importance to this value.
रैंक फ्रॉम 1 to 4 और 1 to 5। हम तो ये कहते ऐसे करके भी हम आपको कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी है। तो लाइक रॉकीच एंड वैल्यू scale known as terminal and instrumental values, where there is a hierarchy. There is an 18 terminal values, 18 instrumental values, and every respondent is required to rank from 1 to 18, from highest to lowest. अब जैसे ये मैंने बताया, अब यही रैंक ऑर्डर वही डेटा है 4 प्रोफेसर का। अभी इसी को कह दिया रैंक में आप कर दिए 1, किसको आप 1 देंगे, किसी को 2 देंगे, किसी को 3, किसी को 4। द सेम डेटा इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड हियर आल्सो कि प्लीज रैंक द इंस्ट्रक्टर लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि आपकी किसकी प्रेफरेंस। तो दीज प्रेफरेंसेज आल्सो वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम सिचुएशन। और फिर कहते हैं कांस्टेंट सम स्केलिंग। रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू एलोकेट ए कांस्टेंट सम ऑफ यूनिट्स अलोंग ए सेट ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड टू सम क्राइटेरिया। यानी कि क्या यूनिट्स जो है एलोकेट करते थे विच रिप्रेजेंट टू द ऑब्जेक्ट्स। तो डेटा, सच टाइप ऑफ डेटा आर ऑब्टेन्ड इन इंटरवल स्केल। अब जैसे क्या होता है खराबी इसमें क्या है कि देखिए, अब वहाँ पे ऑर्डिनल में भी है लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल और अनडिसाइडेड एंड डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता था, द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांगली एग्री टू एग्री इज द सेम, बट द डिफरेंस बियॉन्ड स्ट्रांगली एग्री or beyond strongly disagree to strongly disagree may not be the same। कि क्या मालूम पड़ा कहाँ जा रहे हैं, strongly disagree कर रहे हैं तो कहाँ, beyond that कहाँ, there is no infinite point is there। कहते हैं ना जीरो के beyond कहाँ पे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में तो है, there is an explanation but we cannot do। तो such type of data allows for fine discrimination among alternatives। जैसे ये देखिए अवेलेबिलिटी, एसी टेस्ट अब हमने किए, रवि को अवेलेबिलिटी, फेयरनेस और इजी टेस्ट पे अब हमने ये 3 कर दिया। अब हम 9 के पे रैंक इंटरवल अब आपने बनाया आपने। तो मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट विच आर वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च आर इंटरवल बेस्ड, ज़्यादातर हम करते हैं। अब नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग भी है, देखिए में क्या है, कंटिन्यूस है, आइटमाइज्ड है, सिमेंटिक डिफरेंशियल, फिर स्टेपल और लिकर्ट। ये हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं फर्दर। तो मैंने बताया कि अर्लियर वी यूज टू डू द ऑसगुड, सोसी एंड टेननबाम्स सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमिलरली लिकर्ट स्केल एंड द थर्स्टन रेटिंग स्केल भी यूज़ करते थे, which is not widely prevalent। या सोशोमेट्रिक चॉइस भी होता है, particularly in the field of sociology we used to do about such type of scale। अब देखिए इसमें क्या कंटिन्यूस रेटिंग स्केल है, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम वेरी पुअर टू वेरी गुड। अब देखिए, अब हमने कहा द डिफरेंस बिटवीन 0 to 22, तो अब लगता तो है आपको, but the difference between 0 to 10 is not the same the difference between 10 to 20। तो पहले एक रेंजिंग थ्योरी आई थी, क्योंकि क्या होता, मेजॉरिटी ऑफ अस पर्टिकुलरली ऑन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट और द साइकोमेट्रिक टेस्ट और द पेपर पेंसिल टेस्ट वी अप्लाई गेस हू टेक्निक, फेक रिस्पॉन्स देते हैं ज़्यादातर हम लोग, जिन्होंने थोड़ी देते हैं। 100 आइटम का भी स्केल दे दें आपको, अभी क्लास ख़त्म हुआ आपका, हमने कहा कि नाउ यू आर, तो आप क्या करेंगे, टिक मार देते हैं जल्दी। तो रेंजिंग थ्योरी आई 30 पॉइंट स्केल्स। तो उन्होंने कहा कि समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वाइन, से फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो दिस इज ए से फॉर एग्जाम्पल 11 पॉइंट स्केल। तो ठीक है, वेरी पुअर वेरी गुड को तो दे दिया 100, व्हाट अबाउट 10 20। तो इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज
You cannot say that what 10 refers to, what 20 refers to. The number it helps. तो रेंजिंग थ्योरी आई 30 पॉइंट स्केल से कि आपने 30 सेंटीमीटर बना दिए कि थोड़ा थोड़ा बताओ कि कितना, तो वो क्या हुआ हमारे कंट्री में पर्टिकुलरली इट हैज़ बीन प्रूव डिस्प्रूव्ड, तो सब लोग ऐसे ही है। तो 5 पॉइंट रेटिंग 3 पॉइंट रेटिंग स्केल। हाँ पहले जो था डिस्क्रीट बिल्कुल कैटेगरी होती यस नो, और देयर इज नथिंग लाइक आई फील एंक्शस। अगर सपोज द आइटम इज आई फील एंक्शस, अब हम करें यस नो, some of you would give a response like a no, some of you would give response like a yes. So there is no such thing like a absence and presence of anxiety. वेरिएशन होता है, हो सकता है एट दिस मोमेंट यू मे नॉट बी। इस तरह से हम आपको आइटम दे दें एक कि आई एम ए गुड मिक्सर और आई एम ए सोशेबल पर्सन। अब सपोज इफ आई मिस्टर द सेम बट दिस आइटम इज मेंट फॉर मेजरिंग द extra version. So these are the characteristics which are representing to the extra version. But in the classroom situation, I am a good mixer, I am a sociable person is not the relevant answer. Yeah. Suppose if you are attending the club or the marriage party and you put a tick mark, yes, I am a good mixer, I am a sociable person, then it is okay. But here not. तो कहते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल है। फिर मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर मींस फॉर मेजरिंग एटीट्यूड। कहते हैं अभी रिस्पोंडेंट आर स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री, स्ट्रांगली। तो जनरली वी यूज़ 5 और 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। 7 भी बना लेते हैं, चलो इंग्लिश में बन जाएंगे आपके। जैसे स्ट्रांगली एग्री बनाया, फिर आपने एग्री बनाया, फिर स्लाइटली एग्री बनाया, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर 6 पॉइंट करें तो डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, तो 6 पॉइंट रेटिंग स्केल बन जाएगा, 7 बन जाएगा। बट 9, 10, 11, 13 कैन नॉट पॉइंट टू दिस वर्ड्स। अब ये सेमांटिक डिफरेंशियल का जैसे हमने बताया, सीरीज ऑफ नंबर्ड 7 पॉइंट बाइपोलर रेटिंग, बाइपोलर एडजेक्टिव्स, गुड बैड, ए वेट इज असाइंड टू ईच पोजिशन ऑन द रेटिंग स्केल। अब क्या कहते हैं ट्रेडिशनल स्कोर्स क्या है, चलते हैं अब क्या है, वेरी गुड है तो 7 to 1 यूँ चलाओ आपके, तो वेरी गुड, गुड, स्लाइटली गुड एंड न्यूट्रल को 4 दे दिया। फिर आपके बैड के चले, स्लाइटली बैड, बैड एंड वेरी बैड। तो दिस, as I told you, in the semantic differential scale, the items must represent either to potency dimension, evaluative or activity. ये होना चाहिए। ये करेक्ट एग्जाम्पल ये है आपके। अब पैसिव एक्टिव इज रिप्रेजेंटिंग टू एक्टिविटी डायमेंशन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्टिंग और डल, इट इज आल्सो इवेल्युएटिव डायमेंशन। और एक्साइटिंग एंड काम, पोटेंसी डायमेंशन। तो मस्ट रिप्रेजेंट टू दिस। स्टेपल स्केल्स हैं। अब इसमें क्या है, सिंगल एडजेक्टिव्स है। द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ ए स्टेपल स्केल आर वेरी फेमिलियर टू सेमांटिक डिफरेंस। स्टेपल स्केल टेंड्स टू बी इजियर टू कंडक्ट एंड एडमिनिस्टर। एक ही आपने दे दिया और बस जैसे ये आपने कर दिया स्टेपल स्केल में के स्टोर्स की इमेज कर दी या ब्रांडेड आइटम्स की इमेज कर दी, या अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं ना, मोबाइल कनेक्शन की बात करते हैं, भाई कोई कहता नहीं वोडाफोन बहुत अच्छा चल रहा है, एयरटेल बहुत अच्छा चल रहा है, ये सब। तो अब आपने क्या है, इस तरह डिपार्टमेंट के स्टोर हैं, चीज़ें क्या है कि आप यू कैन असाइन और मेजर द पर्सनस इमेज ऑन द बेसिस ऑफ असाइनिंग सर्टेन नंबर्स। आप इसको कर लो जितना। तो ये स्टेपल की एग्जाम्पल है। फिर ग्राफिक रेटिंग स्केल कहलाते हैं। इसमें वेरी गुड, गुड, वेरी पुअर। अब आपने क्या किया कि इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। अब इसमें क्या है कि अब ये देखिए, ये एक तरह का अनस्ट्रक्चर्ड है। ओनली यू हैव प्रेजेंटेड द आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ सिलुएट्स, जैसे हम अपनी बॉडी का आउटलाइन बना दें, समझे। और
कुछ आपकी बॉडी के शेप दे दें कोई फिगर का, बट देयर इज नो क्लियर photograph either representing to male or the female, but you have to identify considering your own physique कि एस्थेनिक है, एथलेटिक है, पिकनिक है. फिर if your body build is lying between aesthetic and athletic, then systonic है. फिर if your body build is lying between the athletic and picnic, then dystonic हो. But what about the disabled personality? कोई है तो डिसप्लास्टिक भी होती है, जिनके थोड़ा बहुत अगर आप जाएंगे आप कुछ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो दैट इज आल्सो. तो यहाँ पे अब आपको कंसीडरिंग योर द इमोशंस दिस फिगर टू रिप्रेजेंट वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग टू वेरी गुड, वेरी पुअर और माइल्ड. तो ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ. अब बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड स्केल देखिए. बैलेंस्ड स्केल में हमने क्या किया, एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, गुड, बैड, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड. अब ये 6 पॉइंट रेटिंग स्केल हो गया. तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा वेन एवर यू असाइन these values, always consider the difference between the extremely good to very good should be the same as the difference between from the very good to good. पोजिशन तो रिलेटिव है. अब यहाँ पे क्या देखिए, अनबैलेंस्ड, एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, गुड. अब यहाँ तक तो सही चले. अब यहाँ कह दिया सम वाट गुड और फिर बैड और वेरी बैड, या यहाँ कह देते आप स्लाइटली गुड या स्लाइटली बैड, तो वो नहीं चलेगा. तो कहते हैं ये बैलेंस्ड, लेफ्ट साइड में कहते हैं दिस इज द बैलेंस्ड स्केल एंड द अनबैलेंस्ड स्केल. तो समटाइम्स considering or assigning the response categories, we are also expected to do this also. अब ये नॉन कंपैरेटिव स्केल्स का हम चार्ट आपको लास्ट में बताते हैं. आफ्टर दैट वी वुड हैव डिस्कशन. ये देखिए सब है कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का है, मार्क ऑन ए कंटिन्यूअस लाइन, एग्जाम्पल रिएक्शन ऑन टीवी कॉमर्शियल्स. फिर एडवांटेजेस में क्या, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड डिसएडवांटेज हाइबरसम स्कोरिंग अनलेस कंप्यूटराइज. तो इसके लिए कंप्यूटराइज्ड स्कोरिंग चाहिए, कैन नॉट बी डन मैनुअली. इफ यू डू मैनुअली then of course definitely it would be an disadvantage, and you cannot do manually such a number when the size of the sample is very high in number. फिर लिकर्ट स्केल में कहते हैं डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑन ए नंबर्ड स्केल, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स या परसेप्शन हम मेजर करते हैं किसी का. और कहते हैं इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट, एडमिनिस्टर एंड अंडरस्टैंड एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग. मोर टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि अगर आप सपोज इफ आई assign you a task for determining the Cronbach alpha reliability. So in that case, suppose if the test contains 50 items or 60 items, so in that case, and the size of the sample is 500, so in that case you have to give a or assign numbers on the first column, number of the subjects, 1 2 subject or the participant or the respondent, and the item number. Each item score is to be assigned, that is item is to be on a horizontal side, that is items representing to 1 to 60. 60 के आपको स्कोर लिखना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कहते हैं तो दैट्स वाई इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज एवरी आइटम इज बीइंग ट्रीटेड एज एन psychological test in Cronbach while determining the reliability through Cronbach alpha test. पे कहते हैं semantic differential, numbered scaled with bipolar type, brand, products and company images, versatile है, difficult to construct appropriate bipolar adjectives. क्योंकि मैंने बताया 3 वही दिमाग में रखने हैं आपको. इवेल्यूटिव आइटम हो, पोटेंसी हो, एक्टिविटी होना में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए.
तो नंबर ऑफ आइटम्स आर लेस इन नंबर. फिर लास्ट स्टेपल स्केल है, कहते हैं यूनिपोलर है, नंबर्ड स्केल है, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स और इमेजेस के लिए इजी टू कंस्ट्रक्ट, एडमिनिस्टर एंड कंफ्यूज, यो में से कन्फाइनिंग और डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, कि आपको मुश्किल इसका जो है आपको कंफ्यूजिंग बहुत है कि हाउ टू अप्लाई, और यू दैट इज़ टू से द प्रैक्टिकेबिलिटी आस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट इन सच some. So down in this session, I think now we should confine it. If you seek any clarification to this matter, you can ask any question. तो ये सब लोग मतलब कहना चाहिए कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन, मेजॉरिटी ऑफ द डिसिप्लिन द फील्ड ऑफ डिफरेंट सोशल साइंसेस we used to develop, but it is definitely it is a hardest task for us to develop taste, क्योंकि हमारे क्या रिस्पोंडेंट्स जो हैं बहुत ही मामला वो पुअर है. इवन हम लोग भी टीचर्स, तो हम ही 1 महीने से एक साहब को दे रखा मैंने क्या किया, रेटिंग करवाना इस्लामिक पेरेंटिंग के ऊपर, तो 10 लोगों पे भी डेटा उन्हीं का करता था. तो यहाँ कोऑपरेटिव में बाहर तो सब कोऑपरेशन बहुत होता. अच्छा, मोर ओवर फॉरेन कंट्रीज दे आल्सो गिव इंसेंटिव, और जनरली वो लोग थ्रू मेलिंग कलेक्ट कर लेते डेटा. तो हम लोगों का जैसे कोविड पीरियड में चला तो उस टाइम वैसे ही ज़्यादातर लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. एंड दी अवर स्टडीज आल्सो कन्फाइंड टू वेरी लो सैंपल हम लोग करते. तो इसमें भी ध्यान रखिए. एक चीज़ और बता दें आपको जो नहीं इन किताबों में मिलेगी, योर नंबर ऑफ आइटम्स must be multiplied by the subject concerned. Just suppose if you want to construct a particular psychological test, but you have developed or framed 50 items, the size of the sample should not be less than 500. ये ध्यान रखिए. अच्छा, हम लोग जितनी भी रिसर्चेज होती है सब ऐसे करते हैं, 200 का, 250 का, 300, सब इवन नंबर में ऐसे कर लेते हैं. समझते हैं कि ऑड नंबर तो इट हैज नो मीनिंग, बराबर कर देंगे सैंपल, यहाँ पे तो इक्वेट कर देते हैं. तो वो भी. अच्छा, और भी ध्यान रखिए चीज़, मेरे टीचर भी थे ऐसे, तो वो भी हर वो ज़्यादा नॉट ए गुड रिसर्चर, तो क्या कहते हैं उनको मतलब हमेशा he also, I mean, just always interested in getting the significant results. Is significant है ये. तो एक क्वीन मैकलमार बहुत बड़ा टेस्टिंग का स्टैटिस्टिशियन है, क्वीन मैकलमार. तो उसने कहा कि, तो एक आर्टिकल उसने लिखा, व्हाट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज वेयर इट फेल्स. तो उसने कहा नॉन सिग्निफिकेंस में आल्सो हैव अ सिग्निफिकेंस. तो वो तो आपको टोटली डिपेंड्स ऑन यू टू इंटरप्रेट इट. तो वो जब आजकल मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तो आई यूज टू रिमेंबर माई टीचर, उनको याद करता हूँ. तो वो कहते थे, तो हम लोग ले आते थे स्टूडेंट लाइफ से भी पेपर वेपर सब तैयार करके ले आते थे. तो क्या करते, ट्रेन के टाइम पे डिस्कशन वगैरह लिखते थे. तो ये तो कमेंट करते थे हम लोगों पे बहुत, हम तो ज़्यादा नए थे. कहते थे चूरें ढीली हो जाती हैं जब डिस्कशन में यू यूज टू राइट द डिस्कशन ऑफ एनी पेपर. चूरें ढीले हो जाते, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो करते. तो अब क्या होता था कि कॉन्फ्रेंसेस में क्या जल्दी दे इनवाइट पेपर्स, तो टेकिंग पेपर्स, अवर मीन इज टू send our abstract only. So on the basis of that we select those things rather than to. अब कुछ ऐसे भी हैं, there are certain international bodies, they don't accept your abstract. Rather than they said, okay, we will invite, after accepting your abstract, then we will ask you to write the full paper. And the last date of such and such is this one. And then we will consider your presentation in the seminar. आ जाइए. हाँ, now the discussion बहुत चल रहा है, तो हमेशा देख रहे हैं.
size of the sample would be 50 आइटम का स्केल है तो 500. And similarly, the taste, क्या how many items are to be retained, so it also depends it. So generally we select the number of items, particularly in the factor analysis, by applying his own knowledge. तो उसमें भी क्या है कि suppose if you want to retain less number of items, the factor, any case, if the size of the sample is 400 or more than 5 or 500 something, you select only those items whose factor loading would be more than 0.40. उन्हीं को select कीजिए. तो अगर आपके items आ रहे हैं, अच्छा, और आजकल स्क्री प्लॉट भी देखते हैं कि कहाँ पे आपका वेयर यू विल फाइंड द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द factors. It also depends on it, because operationalization of the different construct or the factors is difficult task before it. वो भी मुश्किल काम है. तो दो तीन चीज़. अच्छा, और डिटर्मिनिंग साइज ऑफ सैंपल, कभी आर्बिट्रेरी मत ले ली कि 300 ले लिया. अब नाउ वी हैव ए सेट टेबल भी है कि अगर पॉपुलेशन इतनी हो तो कितने का लेंगे आप, वो तो यू फॉलो दैट पर्टिकुलर टेबल. तो वो आर्बिट्रेरी नहीं ले लीजिए कि 300 ले लिया, 350 ले लिया. बिकॉज नाउ डेज पर्टिकुलरली लाइक इन आवर डिसिप्लिन, मीन मेथोडोलॉजी इज़ वेरी साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए बहुत ज़्यादा. क्योंकि अब तो पहले अर्लियर डेज वी यूज टू राइट ओनली 4 to 5 pages मेथोडोलॉजी चैप्टर. अब आजकल 15-20 पेज का पूरा एक एक चीज़ सब चाहिए आपको, एवरीथिंग यू नीड टू डिस्क्राइब अबाउट इट. तो आप लोग किस किस डिसिप्लिन के हैं, ताकि हम फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में उसी और चीज़ें वैसे दिमाग में रखें. क्या क्या आप लोग सब्जेक्ट? अच्छा है, अच्छा वो मैंने एजुकेशन, अच्छा लाइब्रेरी, है पॉलिटिकल साइंस, Almost all social science subjects. हाँ सोशोलॉजी, हाँ अच्छा, कहाँ मेडिकल से, JNM से. ठीक है. Okay, so we must have a refreshment now. Tea break is there. And वी विल after मीट that- ऑन 11:45 में. yes. हाँ, 15 minutes. हाँ And जहाँ आप लोगों ने where you have taken the dinner, है ना? The tea is served over here. तो इसको बंद कर देंगे. हाँ बंद कर दिए.